Hello friends, welcome to the video lecture series presented by Abel Mathematics Club. This club provides lectures for the students who want to learn mathematics mathematically. These lectures will be useful to understand different topics from UG and PG courses of various universities, as well as these lectures will also be helpful for the preparation of several competitive examinations. This is the third lecture in the lecture series on complex analysis. In the first lecture, we have been through regions in the complex plane obtained by complex number and its modulus. In the second lecture, we have gone through several basic definitions which will be useful to study the complex analysis. The definitions such as neighbourhood of a point, interior point, exterior point, boundary point, open set, closed set, connected set, and all such definitions we have been through in the second lecture. Today we are going to discuss about function of complex variables. Function is a very familiar word to us. When we consider real variable x, then a function can be treated like this, that considering two non-empty set a and b, then a function f from a to b is a rule which assigns to each x belongs to a particular unique number y in b. And for a function from a to b, there are three sets connected to that. A is called domain of the function from which we take x, value of x. B is called codomain of the function. And range means the set of images. For every x belongs to A, we can have fx, that is, we can have image. And that image will be lying in the range. So range is collection of images. So as far as the function for real variable is well known, now we can consider function of complex variable. Consider a subset S of the set of complex numbers. Then a function f on a set S is a rule that assigns to each complex number z in S a unique complex number w. That is a function of complex variable. That domain S is a set of complex numbers, and the images are also complex numbers. Here w is called image of z under f, which is denoted by w equal to f of z. Now, for any complex variable z, as it can be treated as z equal to x plus iy, where x is real part and y is imaginary part. So, f of z also can be treated as uxy plus ivxy. The image of complex number will be a complex number, and every complex number can be represented as real part plus I imaginary part. So whatever function is given, in that we can substitute z equal to x plus iy. So the function can be converted into two variables x and y, and collecting real parts all together and connecting imaginary parts all together, we can get a form like fz equal to uxy plus I vxy, where uxy and vxy are real valued functions of real variables x and y. Uxy is called a real part, vxy is called imaginary part. So that is representation of function of complex variable. Now we look after the polar form of the function. As we have seen in the very first lecture in this lecture series, that every complex number
can be represented in the polar form. What is to do for that? For x equal to r cos theta, y equal to r sin theta. So that coordinate transformation can convert the Cartesian coordinates xy into polar coordinates r theta. And therefore, the complex number z represented by x plus iy can be converted into r cos theta plus I r sin theta, just to substitute the values of x and y. Right? X is r cos theta, y is r sin theta. So z equal to x plus iy becomes r cos theta plus I r sin theta. That means taking r common to that, we get r into cos theta plus I sin theta, and according to Euler's theorem, it will be r e raised to I theta. So z can be converted into r theta. Next, in f of z, wherever z is there, we'll substitute r e raised to I theta. Wherever x is there, will substitute r cos theta, y will be replaced by r sin theta. So everything in f of z will be converted into r and theta. So now u and v will also be functions of r theta. So fz will be represented as u of r theta plus I v of r theta, and that will be polar form of function of complex variable. So function of complex variable will be represented by real part uxy plus I into imaginary part vxy. And in polar representation, that same function will be represented by f of r e raised to I theta equal to u of r theta plus I v of r theta. Right? So now, what is next? We are going to go further with few examples to find real and imaginary parts for this all functions, and we'll also consider polar form in each case. So let us look after few examples in this matter. The first example we consider is the easiest one. Take function fz equal to z square. Consider the function fz equal to z square. What we have to do? We have to find the real and imaginary parts of the function. Not only this, we have to derive its polar form as well. So to get real and imaginary part of the function, we'll substitute z equal to x plus iy. So fz is given as z square. We'll substitute z equal to x plus iy. So we'll get x plus iy whole square. Considering the formula for a plus b whole square, that's s square plus 2ab plus b square, this term will become x square plus middle term is 2 into x into iy, that is 2ixy, plus the last term square is I square y square. As we know that I square is minus 1, so the third term will be minus y square, and it is independent of I. That means it can be considered as a real part. So terms independent of I are x square minus y square. We'll club them together. So first term will be x square minus I square, which is independent of I, plus the next term is I into 2xy. So term independent of I is our real part, and term with I is our imaginary part. So what is real part? Real part of fz is uxy, which is x square minus y square, and imaginary part vxy, that will be 2xy. So we have converted fz in terms of uxy plus ivxy, where uxy is real part, which is x square minus y square in this example, and vxy is imaginary part, that is 2xy. So first job is over. What is the next job? Yes, polar form. To get a polar form, we substitute x equal to r cos theta, y equal to r sin theta, or consider directly z equal to r e raised to I theta. So substituting z equal to r e raised to I theta, will have here z square is
r e raised to I theta whole square. That will be r square e raised to 2I theta. Right? Now, what is e raised to I theta according to our Euler's theorem? E raised to I theta is cos theta plus I sin theta. So, e raised to I 2 theta is cos 2 theta plus I sin 2 theta. Right? Now, again, we will just separate them into real and imaginary part. So, term independent of I will be r square into cos 2 theta. And term with I will be r square into sin 2 theta. So, real part of fz, it is a function of r theta. So, u r theta is r square cos 2 theta. And imaginary part of fz is v r theta, which is here r square sin 2 theta. So, fz can be written as u plus iv in Cartesian coordinate system as well as in polar coordinate system. Let us move on. Second example is fz equal to e raised to z. Again here we are supposed to find real and imaginary part. For that, we start with z equal to x plus iy. So, putting z equal to x plus iy, we got e raised to x plus iy. E raised to x plus iy can be separated as e raised to x into e raised to iy. Now, again use the Euler's theorem for this term e raised to iy, that can be written as cos y plus I sin y. So, we got term independent of I as e raised to x cos y plus I into e raised to x sin y. So, term independent of I will be our real part. So, real part of fz is uxy, which is e raised to x cos y, and imaginary part of fz, that is vxy, equal to e raised to x sin y. Easy one. Now, we go for the polar form. Consider again x equal to r cos theta, y equal to r sin theta. That means z will be r e raised to I theta. Substitute that value of z here. So, fz equal to e raised to z, and z is again e raised to r e raised to I theta. Right? So, now again e raised to I theta on the power will be represented as cos theta plus I sin theta. So, ये हो गया e raised to r into cos theta plus I sin theta. Again, we can separate the power of e, like considering e raised to r cos theta into e raised to I r sin theta. Right? Again, for this term, in the second term, e raised to I r sin theta. फिर से हम यूलर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे. थीटा की जगह पे हमें r sin थीटा दिया है. So that will become cos r sin theta plus I sin r sin theta. Euler's theorem, theta is replaced by r sin theta. Right? So यहाँ पे e raised to r cos theta दोनों से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें मिलेगी फर्स्ट टर्म e raised to r cos theta into cos r sin theta plus I into e raised to r cos theta sin r sin theta. तो हमें रियल पार्ट क्या मिला? इंडिपेंडेंट ऑफ I टर्म, इट इज e raised to r cos theta into cos r sin theta. And imaginary part of the function will be e raised to r cos theta into sin r sin theta. So ये हो गया real and imaginary part. Just we have considered z equal to r e raised to I theta to get a polar form and then to get real and imaginary parts separate. Let's work for the next example. Next one is fz equal to mod z. अगला एग्जाम्पल था fz equal to mod z, right? So again we start with z equal to x plus iy. अब mod z क्या है? It is a modulus of a complex number. उसकी फॉर्मूला क्या है? तो स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर. सो mod z हो गया स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. सो mod z स्क्वायर हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. Right? So fz is mod z square. So that is x square plus y square. यहां पे अगर आप देखते हैं तो इसमें I वाली टर्म ही नहीं है. mod z square वैसे भी रियल नंबर है.
We have seen that in the first lecture of basic class that mod z is always a real number. Modulus of any complex number is actually a real number. So mod z square is x square plus y square which is real number. यहाँ पे i वाली टर्म नहीं है, मतलब इमेजिनरी पार्ट हो गया 0. So real part है x square plus y square, imaginary part है 0. Right? तो ये हो गया डायरेक्टली रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट mod z स्क्वायर के लिए. इसका पोलर फॉर्म, सिमिलर आइडिया, सिमिलर कंसेप्ट. कंसिडर x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा. तो r क्या होगा इसमें? r की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. यहां पे कार्टेशियन से पोलर हमने ऐसा कन्वर्ट किया. यहां से अगर हम i की वैल्यू निकालना चाहते हैं, सो विल टेक x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इट विल बी r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा. वहां से r स्क्वायर कॉमन निकलेगा, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर हो जाएगा 1. तो we get r square equal to x square plus y square and therefore r will be root of x square plus y square. और ये हो गया mod z. mod z की फॉर्मूला भी स्क्वायर रूट ऑफ x square plus y square ही है. तो modulus of z will be r. So mod z square is r square. Again you can look here, there is no term including I. So imaginary part of mod z square is 0 in polar form and real part of mod z square is r square in polar form. राइट. सो ये जो मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर है वो अपना रियल वैल्यूड फंक्शन होगा. इसका वेरिएबल कॉम्प्लेक्स है लेकिन उसकी वैल्यू, उसका आंसर रियल है. सो इट इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल. आगे चलते हैं. अगला एग्जांपल है fz इक्वल टू z प्लस 1 बाय z. यहां पे भी हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने हैं. तो जहां पे z है वहां पे हम लोग रखेंगे x plus iy. So z is replaced by x plus iy plus 1 by z becomes 1 by x plus iy. अब कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग डिनोमिनेटर में i नहीं रखते हैं, so we'll multiply by conjugate x minus iy for the second term only. In the second term multiply by the conjugate x minus iy. So it will become x minus iy upon x plus iy into x minus iy, that is x square minus i square y square. ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. राइट. फर्स्ट टर्म एज इट इज हमने रखा है x प्लस आई वाई. यहां पे एलसीएम लेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस टर्म और x माइनस आई वाई सेपरेट. अभी यहां पे इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करेंगे टर्म बाय टर्म. सो x स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब प्लस x स्क्वायर इंटू आई वाई, दैट इज i इंटू एक्स स्क्वायर वाई प्लस y स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म से. सो y स्क्वायर इंटू एक्स और इट इज एक्स वाई स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू वाई हो गया y क्यूब इंटू आई, सो इट इज आई वाई क्यूब. और एंडिंग टर्म एज इट इज x माइनस आई वाई, उसमें कुछ नहीं करना है. अभी यहां से हम लोग रियल पार्ट्स इकट्ठा करेंगे. कलेक्टिंग रियल पार्ट्स, x क्यूब इज रियल इंडिपेंडेंट ऑफ i, देन एक्स वाई स्क्वायर independent of I, then plus x, that is independent of I. So total real part मतलब independent of I terms हो गई x cube plus xy square plus x. और बाकी सभी टर्म्स में से i अगर हम लोग कॉमन निकल रहे हैं तो ये हो गया i इंटू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब माइनस वाई. इसको रीऑर्डर करते हैं तो इंक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स, इंक्रीजिंग पावर से डिक्रीजिंग पावर तक जाएंगे तो आई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई. ये हो गया आई वाला टर्म. और डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेट देते हैं तो हमारा रियल पार्ट क्या हो गया, यू एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. और इमेजिनरी पार्ट वी एक्स वाई हो गया हमारा वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो ये हमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मिल गए. अभी पोलर फॉर्म की बारी है. अगेन इन पोलर फॉर्म पुट z इक्वल टू r e raised to i थीटा. हमें पता है अभी पोलर फॉर्म के लिए क्या करना है, जहां पे z है वहां पे r e raised to i थीटा लिखना है. तो fz होता z प्लस 1 बाई z, उसमें हम z इक्वल टू r e raised to i थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो z इज रिप्लेस्ड बाय r e raised to i थीटा. 1 अपॉन z विल बी 1 अपॉन r e raised to i थीटा. लेकिन 1 अपॉन e raised to i थीटा है वो हो गया e raised to माइनस i थीटा. पावर गेट्स नेगेटिव
from denominator to numerator, right? So 1 upon r e raised to I theta हो गया 1 upon r into e raised to minus I theta. Again use the Euler's theorem. e raised to I theta की जगह पे हम लिखेंगे cos theta plus I sin theta, और e raised to minus I theta है वो हो जाएगा हमारा cos theta minus I sin theta. So r into cos theta plus I sin theta plus 1 by r into cos theta minus I sin theta. यहां से हम independent of I terms कलेक्ट करेंगे. Then terms of independent of I will be r cos theta plus 1 upon r cos theta. Cos theta is common from that, so it is r plus 1 upon r into cos theta. Or term with I, that is imaginary, that will be r sin theta minus 1 by r sin theta. Then sin theta will be common in that, we'll get r minus 1 by r into sin theta. So real part of fz will be r plus 1 upon r into cos theta. Imaginary part of fz will be r minus 1 upon r into sin theta. So that we got in polar form, right? So ये सारे एग्जांपल्स में हमने क्या देखा कि कोई भी फंक्शन है उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट हम लोग सेपरेट कर सकते हैं. अगर कार्टेशियन में करना है तो z इक्वल टू x प्लस आई वाई लेना है, और इफ यू वांट टू गेट इट इन पोलर फॉर्म देन वी पुट z इक्वल टू r e raised to I theta. या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करें और कार्टेशियन में x की जगह पे हम रखेंगे r cos theta और y की जगह पे हम रखेंगे r sin theta. ऐसे भी हो सकता है. आगे चलते हैं. Now we are supposed to have some examples in which we are required to find real and imaginary parts of other few functions sin z, cos z and log z. वन बाय वन देखते हैं. हमें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट जहां पे भी फाइंड करनी होती है तो उसकी टर्मिनोलॉजी एक ही टर्म से शुरू होगी कि जहां पे z है वहां पे हम लोग x प्लस आई वाई लिखेंगे. इफ यू वांट टू फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ फंक्शन of complex variable, just substitute z equal to x plus iy if you want a polar form, sorry, Cartesian form. So here also we consider z equal to x plus iy. So अब z equal to sin z हो जाता है sin of x plus iy. sin अल्फा प्लस बीटा की हम अगर फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये हो गया sin x cos iy प्लस cos x sin iy, जिससे साइन अल्फा प्लस बीटा होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा. यहां पे अल्फा की जगह एक्स रखेंगे एंड बीटा इज रिप्लेस्ड बाय आई वाई. अब हम जानते हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस के बारे में. हाइपरबोलिक फंक्शंस के साथ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का रिलेशन कैसे डेवलप होता है, कि cos आई वाई है, अगर इमेजिनरी एंगल है cos आई वाई, दैट विल बिकम cos एच वाई. And sin iy is equal to I sin hy. This is the relation corresponding to hyperbolic function with trigonometric function with imaginary angle. So जहां पे cos iy है यहां पे हम लिखेंगे cos hy और sin iy will be replaced by I sin hy. So यहाँ पे फंक्शन मिल गया हमें sin x cos hy for the first term plus second term becomes I into cos x sin hy. So again we got term independent of I, that is first term, that is our real part uxy sin x cos hy, and term with I, that is our imaginary part, that is cos x sin hy. So we got real and imaginary part here. Similar consideration हमें लेनी है cos में. cos z सेम टैग का एग्जांपल हो गया. cos z में अगर हम z इक्वल टू x प्लस आई वाई रखते हैं फिर cos अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वो हो गई cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा. अल्फा को x के रिप्लेस करेंगे एंड बीटा विल बी रिप्लेस्ड बाय आई वाई. सो वी गेट दिस. अगेन विल यूज देयर आइडेंटिटी. cos आई वाई इज cos एच वाई, sin आई वाई इज आई sin एच वाई. तो हमें रियल पार्ट मिलेगा cos x cos एच वाई, इमेजिनरी पार्ट मिलेगा माइनस sin x sin एच वाई. तो ये सेम एग्जांपल हो गया sin z के जैसा ही. आगे जाते हैं फंक्शन fz इक्वल टू log z. यहां पे अगर हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है तो हम पहले पोलर फॉर्म यूज करेंगे. यूजिंग द पोलर फॉर्म ऑफ z we can have real and imaginary part of this function. So let us use polar form of z. z का पोलर फॉर्म क्या हुआ, x अगर हम r cos थीटा रखते हैं, y r sin थीटा रखते हैं, हमने कई बार ये किया है, तो z हो जाएगा r e raised to theta. Lots of time we have been through this, so it is now straightforward and easier. So z equal to क्या रखना है हमें,
यहां पे r e raised to I थीटा। सो fz हो जाएगा log r e raised to I थीटा। सो fz की वैल्यू हो गई log r e raised to I थीटा। अभी यहां पे r एंड थीटा यूज कर रहे हैं, तो r और थीटा की वैल्यू कैसे मिलेगी? हमने पहले देखा था, पहले लेक्चर में देखा था, या फिर कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन में भी आपको पता है कि अगर x इक्वल टू r cos थीटा लेते हैं, y इक्वल टू r sin थीटा लेते हैं, तो r हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और थीटा हो जाएगा tan इनवर्स y बाय x। जैसे r हो गया, जैसे x हो गया r cos थीटा, y हो गया r sin थीटा, दोनों को डिवाइड करेंगे y बाय x करेंगे तो वो tan थीटा मिलेगा, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स y बाय x। हमने पहले लेक्चर में ये डिस्कस किया था, थीटा को आर्ग्यूमेंट z कहते हैं और r को मॉड्यूलस कहते हैं। सो यहां पे चलो शुरू करते हैं fz से। fz इक्वल टू log z है, z की वैल्यू हमने रख दी r e raised to I थीटा। Then you can separate the log in the multiplication. It's like log of xy equal to log x plus log y. The multiplication would be transformed into addition. So log r e raised to I theta हो गया log r plus log e raised to I theta। अभी जो पावर है log में वो आगे आ जाएगा, the power rule in the logarithm. So I theta can come forward, log r प्लस आई थीटा log e। यहां पे हमने बेस e लिया हुआ है, ln लिया हुआ है, नेचुरल लोगेरिथम, राइट। सो log r प्लस आई थीटा log e, नेचुरल log, और log e टू द बेस e क्या होगा? 1 होगा, राइट। रूल ऑफ द लोगेरिथम, log a टू द बेस a फॉर एनी रियल नंबर a, इट विल बी, एनी पॉजिटिव नंबर है, इट विल बी 1। सो log e टू द बेस e विल बी 1। तो यहां पे सिर्फ हो गया आई थीटा। अब r और थीटा की वैल्यूज हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो r इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा इज tan इनवर्स y बाय x। अगेन दिस इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एस टू 1/2 इन द फर्स्ट टर्म। पावर 1/2 हुआ, log में पावर फिर से आगे आ जाएगा। सो वी विल हैव 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस i tan इनवर्स y बाय x। सो यहां पे फ्री फ्रॉम आई टर्म है 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो हमारा हो जाएगा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होगा tan इनवर्स y बाय x। सो विद दिस एग्जांपल्स वी कैन अगेन नो हाउ टू गेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अभी फ्यू मोर एग्जांपल्स हमारे लिए है डोमेन ऑफ डेफिनेशन फाइंड करने के लिए। डोमेन ऑफ डेफिनेशन हमें पता है क्या है? डोमेन ऑफ डेफिनेशन मतलब फंक्शन का डोमेन। जैसे हम रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए, रियल वेरिएबल फंक्शन के लिए हम लोग डोमेन लेते हैं, वैसे यहां पे हमें डोमेन फाइंड करना है सभी फंक्शंस का। डोमेन मतलब ऐसा सेट जिसके ऊपर फंक्शन डिफाइन होता है, ऐसा सेट जिसके सभी नंबर, सभी वेरिएबल्स के वैल्यूज के ऊपर फंक्शन वेल डिफाइंड होना चाहिए, उसको हम डोमेन कहते हैं। फॉर एवरी नंबर ऑन डोमेन वी मस्ट गेट इमेज। तो यहां पे अगर हम 1/z² + 1 लेते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो हमें क्या देखना है कि ये फंक्शन कौन से पॉइंट पर डिफाइन नहीं होता है। That points at which function is not defined, we should exclude from the complex plane. तो यहां पे हो गया 1/z² + 1, तो ये कहां पे डिफाइन नहीं होगा? जहां पे डिनोमिनेटर 0 होगा। डिनोमिनेटर 0 होगा मतलब z² + 1 = 0 होगा। z² + 1 = 0 हम रखेंगे तो z² = -1 होगा, मतलब z की वैल्यू मिलेगी ±i। मतलब i और -i अगर हम z की रखते हैं तो यह फंक्शन उसके ऊपर डिफाइन नहीं होगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो डोमेन क्या मिलेगा हमें? i और -i को एक्सक्लूड करके बाकी जो भी पॉइंट्स है कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में, वो सभी पॉइंट के पर फंक्शन डिफाइन होगा। तो हमारा डोमेन होगा C माइनस द सेट i, -i। हमें ये दो पॉइंट एक्सक्लूड करने हो गए। सेम वे इफ यू कंसिडर द सेकंड एग्जांपल 1/1 - mod z², तो ये फंक्शन कहां पे डिफाइन नहीं होगा? जहां पे मॉड्यूलस ऑफ z 1 होगा, राइट। मॉड्यूलस z -1 तो हो नहीं सकता है क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ z इज ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर। तो mod z पॉजिटिव नंबर ये है, तो mod z जहां पे 1 होगा वहां पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो हमें क्या एक्सक्लूड करना है?
मोड z इक्वल टू 1 जितने जितने पॉइंट पे है वो सारे एक्सक्लूड करने हैं। मोड z इक्वल टू 1 ज्योमेट्रिकली क्या है? इट इज अ सर्कल, बाउंड्री ऑफ द सर्कल, या सर्कल विथ सेंटर 0 0 एंड रेडियस 1। तो वो जो यूनिट सर्कल है हमारा, वो अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन में से निकाल दे तो बाकी जो भी सारा बचा वो हमारा डोमेन होगा। तो यहां पे डोमेन हम लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z बिलोंग्स टू C सच दैट मोड z नॉट इक्वल टू 1। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि डोमेन इज C, कॉम्प्लेक्स सेट C माइनस सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z बिलोंग्स टू C वेयर मोड z इक्वल टू 1। ये या फिर ऐसा भी हम लोग समझ सकते हैं कि पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन, पूरे आर्गन प्लेन में से हम अगर यूनिट सर्कल निकाल दे, बाकी जो बचा वो इसका डोमेन हो गया। थर्ड एग्जांपल है z अपॉन z प्लस z बार। z कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके फॉर्म होगा x प्लस आई वाई। अगर z x प्लस आई वाई है तो z बार उसका कंजुगेट हुआ, इसका फॉर्म हुआ x माइनस आई वाई। दोनों को ऐड करते हैं, z क्या है? x प्लस आई वाई। z बार क्या है? x माइनस आई वाई। दोनों को ऐड करते हैं तो आई वाई वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, बिकॉज दे आर ऑपोजिट साइन। z में x प्लस आई वाई है, z बार में x माइनस आई वाई है। तो z प्लस z बार लेते हैं तो आई वाई में कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? x प्लस x, दैट विल बी 2x। तो z प्लस z बार हो जाएगा 2x। वो कब जीरो होगा? जब 2x जीरो होगा, दैट मीन्स x जीरो होगा। x क्या है? x इज रियल पार्ट ऑफ z, मतलब वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं आएंगे जिसका रियल पार्ट जीरो होगा। तो डोमेन क्या होगा? इट्स द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर whose रियल पार्ट इज नॉन जीरो। या फिर ऐसा लिखेंगे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर C माइनस द सेट z बिलोंग्स टू C वेयर रियल पार्ट इक्वल टू 0। सो व्हेनेवर x इज नॉन जीरो, रियल पार्ट ऑफ z इज नॉन जीरो, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर फंक्शन के डोमेन में आएंगे। तो आज हमने सिर्फ बेसिक लिया है, बेसिक ऑफ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। यहां पे हमने देखा कि फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे रिप्रेजेंट होता है और उसका रिप्रेजेंटेशन uxy प्लस ivxy, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट उसमें कैसे निकालते हैं और उसका पोलर फॉर्म कैसे निकालते हैं। और अंत में हमने देखा कि डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन क्या है और हाउ टू फाइंड डोमेन फॉर अ सर्टेन स्टैंडर्ड फंक्शन। सो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल अबेल मैथमेटिक्स क्लब ऑन यूट्यूब। थैंक यू वेरी मच।